Hello everyone, welcome to Prep Masters. This is Rishi, and in this video I'm coming up with the questions and important examples of integration. इसमें हम लोग सबसे पहले मैं कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस देना चाहूँगा जो लोग इंटीग्रेशन की शुरुआत कर रहे हैं. आई होप आपने मेरा फर्स्ट पार्ट देख रखा होगा. इफ़ यू आर स्टार्टिंग इंटीग्रेशन यू आर एक्सपेक्टेड कि आपको कुछ बेसिक चीज़ें आती हों. जैसे आपको ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस आने चाहिए. 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, 1 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू cosec स्क्वायर x, राइट. देन आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 प्लस cos 2x इज ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos 2x इज ट्वाइस ऑफ sin 2x, sin square x, twice of sin square x. तो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक अल्जेब्राइक फंक्शंस लाइक a plus b whole square, a minus b whole square, a plus b into a minus b, a plus b whole cube, that is a cube plus b cube plus 3ab a whole a plus b. इस तरीके की बेसिक अल्जेब्राइक फॉर्मूलेज, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज आपको आनी चाहिए. दिस इज एक्सपेक्टेड. और जो हमने फर्स्ट वीडियो में किया था उसको यूज करते हुए आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं. लेट मी डिस्कस द फर्स्ट एग्जांपल विद यू. दिस इज x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 7/x प्लस 2 अपॉन रूट x विद रिस्पेक्ट टू dx. हमें इसे इंटीग्रेट करना है. नाउ इफ आई इंटीग्रेट x क्यूब, व्हाट इज दैट? x रेज टू द पावर 3 plus 1 अपॉन 3 plus 1, राइट? दैट वाज द फॉर्मूला. व्हाट अबाउट दिस 5? 5 will be taken out. This will be x raised to power 2 plus 1 upon 2 plus 1. What about minus 4? That would be minus 4 x raised to power 1 upon x raised to power x 1 plus 1, right? 0 plus 1. Why did I take that? I hope you realize that this minus 4 is actually minus 4 into x raised to power 0. And x raised to power 0 is what? X raised to power 0 plus 1, which is x. So you should remember that. In the previous video I also told you that whenever you integrate a function c with respect to dx, there is always cx plus some constant, let's say that is k. So ये चीज हमें समझ में आ रही होगी. I believe that. The next expression in our example is, this is 7 upon x. So this is what? 7 of log of modulus of x. What about the last function? This is 2 into x raised to the power minus 1 by 2. So 2 is taken as it is, x raised to the power minus 1 by 2 plus 1 upon minus 1 by 2 plus 1, not to forget the constant c. If I write this finally, the answer should be x raised to the power 4 upon 4 minus 5 upon 3 x cube minus 4x plus 7 log of modulus of x. Don't forget to put the modulus whenever you are using a log. Always use that. Similarly, this would be 2 into x raised to power minus 1 by 2 plus 1 will be x raised to power 1 by 2, which we know that it is root x. In the denominator, minus 1 by 2 plus 1 will be plus 1 by 2. Plus 1 by 2, this 2 can be taken in the numerator and hence we can write it as 4 root x plus c. So that would be the final answer for this example. Let us discuss the second example. I've taken an expression which is a quotient function. There are two functions. One polynomial is in the numerator, the other is in the denominator, right? अब अगेन कुछ ऐसा करना है जिससे कि चीजें थोड़ी सिंपल हो जाए और हम लोग इजीली कर लें. सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे. द एक्सप्रेशन वुड रिड्यूस टू, द फर्स्ट टर्म वुड बिकम x, नेक्स्ट टर्म वुड बिकम 5, नेक्स्ट विल बी 4 अपॉन x एंड द नेक्स्ट वुड बी 1 अपॉन x स्क्वायर. वी हैव टू इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू dx. दिस अगेन बिकम्स वेरी सिंपल. डायरेक्टली मैं इसका आंसर लिख देता हूँ. x को इंटीग्रेट करेंगे कितना आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2. नेक्स्ट वुड बी 5x. दिस विल बी 4 of modulus of log x.
This is x raised power -2, which is x raised power -2 plus 1 upon -2 plus 1 plus c. तो ये चीजें तो एज इट इज रह जाएंगी. ये जो लास्ट एक्सप्रेशन है ये क्या बनेगा? दिस इज x raised power -1 and this is -2 -1, so this -1 upon x plus c, that is what will be made out of the last given thing. Okay, well, now I've taken 3 examples simultaneously. The first one is 1 plus cos 2x, next one is 1 minus cos 2x, and the next one is 1 plus sin 2x. The fourth one could have been 1 minus sin 2x dx. इन सबका एक स्टैंडर्ड, ये सारे बड़े स्टैंडर्ड फॉर्मेट हैं जो आपको बार बार एग्जाम में और क्वेश्चन पेपर्स में मिलते हैं. ऑल्दो दे आर वेरी इजी, राइट. इसकी वेटेज नॉर्मली 1 या 2 मार्क्स से ज़्यादा नहीं होती. तो अभी डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे भी हम लोग आएंगे ग्रेजुअली व्हेन वी प्रोसीड विद दिस वीडियो सीरीज. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 1 प्लस cos 2x? द फॉर्मूला इज 2 cos square x dx. So this will be taken as root 2 cos x dx. Root 2 will be taken, and what is the integration of cos x? That is minus sin x. Is it minus sin x or it is plus sin x? It is always plus sin x. Why? Because the differentiation of sin x is cos x. That is why the integration of cos x would be plus sin x. Not to forget the value of c. So the answer for the first one would be root 2 sin x plus c. Here in this one, the second expression, this can be taken as 2 sin square x dx. अब ये जो sin square x है इसको मैं क्या लिख लूंगा? दिस root 2 को अलग लिख लेता हूं और sin square x को I'll write as sin x dx. Now what is the integration of sin x? Minus cos x, right? Minus cos x plus c. Why? Because the differentiation of cos x is minus sin x. So as we understand, it is just the inverse process. So that will be minus cos x. So the answer would be minus root 2 cos of x plus c. Coming to the last one. Here we have 1 plus sin 2x. अब इसके लिए तो कोई ट्रिगोनोमेट्री में हमारे पास 1 plus sin 2x के लिए कोई फॉर्मूला भी नहीं है. तो इसमें क्या करें? The problem is this अंडर रूट. ये अंडर रूट को हटाए बिना तो कुछ बात बनेगी नहीं, राइट. अगर सिर्फ sin 2x होता फिर भी कुछ हम लोग सोच लेते, बट यहाँ पे ये अंडर रूट है. अब ये अगर अंडर रूट है तो समझ में आ रहा होगा हमारे पास कि ये हमें दे रखा है 1 क्या होता है? sin square x plus cos square x. और sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x. That means this expression could have been written like this. 1 की जगह पे मैं लिखूंगा sin square x cos square x, और sin 2x की जगह पे मैं लिखूंगा twice of sin x cos x. This whole thing has to be integrated with respect to dx. If we realize this is sin x plus cos x whole square, जब मैं इसको अंडर रूट के बाहर लेके जाऊंगा I'll be left with simply sin x plus cos of x with respect to dx. Now what is the integration of sin x? It is minus cos x. And what is the integration of cos x? It is plus sin x. So the answer for the third one would be minus cos x plus sin x plus c. अगर यहाँ पे 1 minus sin 2x होता तो मैं क्या करता? sin square x plus cos square x minus 2 sin x cos x. यानी इस केस में हमारे पास जो इंटीग्रेशन बनती that could have been sin x minus cos x or cos x minus sin x. Why? Because a minus b whole square is also equal to b minus a whole square. So remember that in that case there will be 2 possible answers. To the second last example for this video. This is of the form e raised power x log a, e raised power a log x and so on. इस एग्जाम्पल से हम लोग 3 चीजें सीखेंगे. सबसे पहली चीज आपको ये सीखनी है that whenever it is e raised to the power log of x, and definitely whenever the base is not mentioned in calculus, you should consider it, that value, the base should be e. So e raised power log x is nothing but x always, right?
और इन जनरल यू कैन से a रेज टू द पावर log of x टू द बेस a। अगर ये वाला बेस और log का बेस अगर सेम है तो दिस वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू x। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं देख रहा हूं ये e दे रखा है, e दे रखा है। आई होप आपको log की प्रॉपर्टी ध्यान होगी that m log of a is nothing but log of a raised to the power m. Let me use that in this question. This could have been written as e raised to the power log of a raised to the power x. The second expression is e raised to the power log of x raised to the power a, and the third one is e raised to the power log of a to the power a. Now everywhere the base is e, so we understand the first expression is a raised to the power x, second is x raised to the power a, and the third one is a raised to the power a. Now a raised to the power x, what is this? This is of the form a raised to the power x upon log of a to the base e. तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? a raised to the power x log of a to the base e. This is x raised to the power a plus 1 upon a plus 1, and this is a constant. A raised to the power a is a constant. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? a raised to the power a into x, not to forget the constant c. That is the answer for this expression. Coming to the last question of this video, this is a sine inverse function where we have 2 tan x and 1 plus tan square x. Now in order to integrate this, I realized that I have to do some trigonometrical operations inside so that I can get some function of sine theta, right? Maybe sine x or something like that, so that this sine inverse thing can be cancelled out. Let us see what can be done. यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 tan x को as it is रहने देता हूँ, फिर ऐसा करता हूँ 2 sin x upon cos x लिख लेता हूँ. Any problem? Instead of 1 plus tan square x, I'll write sec square x, and I hope you realize that sec square x is nothing but 1 by cos square x. This cos x is cancelled with the square, and this 1 upon 1 by cos x will be going up, so we'll be left with integration of sine inverse, this is 2 sin x cos x with respect to dx. Now what is sin x cos x? That is sin 2x. ये हमारा sin 2x बन गया, यानी हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आया वो आया sin inverse of sin 2x dx. Sin inverse and sin would be cancelled out and will be left only with 2x dx. This remains 2x square plus 2 upon c. This 2 is cancelled out, and so the final answer is x square plus c. So children, I stop here with a suggestion कि trigonometry के important identities याद रखिए, उनको रिवाइज कीजिए. लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज याद रखिए, उनको रिवाइज कीजिए. इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक प्रॉपर्टीज याद रखिए, उनको रिवाइज कीजिए. I'll come up again with the next video. Thank you. Wish you all the best. Thanks a lot.